So, am I visible? Anyone who is actually live right now? If anyone is able to see me, please ping me a message. Okay, fine, fine. So, Exclara is there. So, welcome, Exclara. Yeah, hello, Manas. So, I believe that, as I mentioned to all of you, that yes, Manas, thank you for sending me a message that I'm now visible to all of you. Uh, so, am I visible also on Facebook? Good afternoon, Neetu. Fine. So, shall we start? Yeah. So, fine. So, let me again welcome all of you. Karthik, hello, Karthik. Good afternoon. So, let me welcome all of you to this Amit Sinha IS Academy. That's basically an online initiative that three or four of us actually have undertaken. Me, Nikhil sir, Kanishk sir, Nidhi ma'am. So we all actually have undertaken this initiative because of this lockdown, as you all know. Now, let me be very clear and precise to this particular session. As I told you earlier already, that we will be having this particular discussion to know about the significance of the writing test papers, basically, and how are we going to conduct the test paper here on our platform. Now, for that only, I wanted to have a direct interaction with all of you. Fine. So now let me be again uh, put up a particular plan for all of you. I don't know how many of you actually have seen the plan that I actually shared. I think maybe in a week back regarding the Prelims test series, and there only I mentioned to all of you that I will be definitely conducting this test series under my own observance. And when I said my own observance, obviously it means that uh, the papers would be designed by me personally. Obviously, the other teachers will also assist into that, but largely I will be I would say the course director in that way. And no, definitely. I mean, the idea is that if you have seen the plan, let us first discuss the plan. And hello, Ajinkya, welcome. So let us just first of all discuss the plan, and then furthermore we'll discuss about how to prepare this exact plan. All right. So now, if you can, I mean, if you have the plan, you can see into it. If you don't have, then I'll have to share it with all of you. So first of all, let me. Yeah. Hello. Hello, Sonali. Hello. Yeah. So first of all, now let me actually share with you a plan. Look, plan is very simple and straightforward. That is, if you have of course, how many of you are actually having the plan so that I can be very precise to the discussion of test plan only.
If you have, then it's okay. Otherwise, you can still download it from my Facebook page that is already there. So now see, the plan is like this way, that we're going to conduct 11 tests. 11 tests for the prelims 2020. Now, as all of you know about that, on 4th of October, of course, you guys have to actually go for. By 4th of October, you guys have to go for the preparation of your entire prelims 2020. And as UPSC has already extended the date, fine. So you must be having a fair idea that probably the task has actually increased rather to decrease. In fact, it has increased. So 4th of October is the date of the examination. So accordingly, 11 test papers have been designed for all of you. Now, if you see the papers, I mean, of course, the very first paper we are going to conduct it is on uh, 30th. All right, so 30th of this month, in fact, June, we are going to conduct the first test. All right, and the first test I have deliberately, in fact, I'm setting the paper. In fact, these days, and definitely I have made this paper deliberately open for all. All right, and this paper is going to be purely on current affairs. Right. So the first test I'm going to conduct it is going to be completely on the current affairs. So finally, those uh, those who actually have not gone through the current affairs, so they actually will have a chance not only to go through the current affairs but also at the same time, in fact, start preparing for the current affairs. Fine. So that's what actually will be my idea. In fact, so the first test that is going to be on 30th of June, and that is completely going to be on current affairs. And in this particular paper, I have already decided to ask you a question of last 1 year completely. In fact, the syllabus of the first test would be that current affairs from May 2018 only. All right. Yeah. Hello, Akshay. Hello, Abhishek. So May 2018 only. So from May 2018 to June 2019. So to June 2019, you have to prepare your entire current affairs for the first test. Fine. And in this test, I'm going to ask you the questions of the 2018-2019 current affairs. The reason is that I told you already that in fact the current affairs of 2018-19 is also supposed to be prepared to handle the questions of current affairs nicely. However, I'll also give you brief analysis on the importance of course, the current affairs, whether it actually has increased or decreased, or what actually should be the significance of current affairs for the prelims एग्जामिनेशन. ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करूंगा आपके साथ कि करंट अफेयर्स में एग्जैक्टली उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है या घटा है, या उसका क्या उसका होना चाहिए वेटेज अपनी तैयारी में, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा अभी करूंगा आप लोगों से. ठीक है, तो फिर से मैं आता हूँ इस मुद्दे पे कि पहला जो टेस्ट है जो कि 30 जून को होने वाला है, वो 30 जून का जो टेस्ट है वो ऑनलाइन ही करवाएंगे. ठीक है, पेपर जो है आपने देखा होगा कुछ दिनों से हम लोग जो रेगुलर क्विज करवाते थे, चाहे हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का भी शुरू हो गया है, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट के एक सॉफ्टवेयर पे हम करवा रहे हैं. तो वैसे ही सॉफ्टवेयर पे हम टेस्ट करवाएंगे. ठीक है, उसमें आपको अपना नाम और डिटेल्स फिलअप करना है और टेस्ट पेपर आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा ऑनलाइन. तो उसमें आपको टेस्ट लिखना है, या गुड आफ्टरनून आनंद. सो उसमें आपको टेस्ट लिखना है. ठीक है, और टेस्ट लिख के सबमिट कर देना है. वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, आई वुड से हस्बली प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट. ठीक है, तो ये तरीका है टेस्ट वो करवाने का. तो पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है, आप सभी के लिए. इनफैक्ट तो आप लोग जितने लोग हो सकते हैं अपने अपने मित्रों में जो देना चाह रहे हैं एग्जाम 2020 का, उनको जरूर बोलिए लिखने के लिए वो टेस्ट. ठीक है, तो वो एक पहला जो टेस्ट का प्लान है, मैंने आपको पहला टेस्ट पेपर शेयर किया कि करना क्या है उसके अंदर. ठीक है,
और अच्छी बात क्या है कि टेस्ट के बाद हम लोग एक दिन पूरा उस पर डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो actually there is no any particular website to access the test. Idea is that on our pages only, we will actually upload the test, and the test will be able to access by all of you through our either the drive, of course through the drive you can access it, or through the Microsoft, of course, software that they actually have got it recently, ठीक है। तो हमने कुछ पैसे देके उस सॉफ्टवेयर को भी अभी लिया है, उस सॉफ्टवेयर से आपका टेस्ट आसानी से हो जाएगा, सो डोंट नीड टू एक्चुअली बॉदर मच ऑन दैट how the test will be conducted. Fine. So we have already taken all these things on an experimental basis through conducting our regular quiz sessions last I think 5 6 days. Days. So this is how the things would be done that. Now, second point that I was discussing with all of you is that the good thing about the test over here would be what that we'll be conducting a discussion session also. So discussion session where of course our respective faculties would also be available there at a particular time. So we will actually give you the timings about, let's say, if I mean the questions I have to discuss, I'll give you time of particular session. In this session, you have to have a live interaction session with me. Similarly, the other teachers will also come live with you, and they will also discuss those questions where you actually have had a problem or rather you could not solve it properly, ठीक है। तो डिस्कशन होगा तो उससे आपका चीजें आसान हो जाएगी। और Alok has asked a question, what is the fee? So Alok, fees is very nominal. It is only 999, all right, including GST. So 999 fees would be there, fine. So that is the only promotional fees, fine. So it is going to be for the first 100 students, in fact, and then we will further increase it later on. But that's not actually the proposal right now. Fine. So this is the fee currently. So the discussion will be there, all right, and of course discussion will be done on a particular date. The date is also mentioned in the plan. For example, the first discussion will be done on 5th of July, all right. So that is going to be there. Then similarly, you will be having the test on second test is on modern India. Now, on modern India, the test will be conducted on 6th of July. Fine. And then a discussion of the same will be done on 12th of July. So, similarly, modern India test has to be also prepared by all of you. Since we have, in fact, I have already conducted several round of quiz on modern India in last 1.5 months. If you have been following me, then probably you must be knowing about it. So, of course, modern India you have to again prepare so that we can test you on 100 questions. All right, and definitely after that we'll be also having a session of discussing those questions of modern India. Fine. So, idea is that modern India. Uh, the area of modern India is concerned, it's very vast. Fine, it's very vast, and definitely, I would suggest to all of you that you guys need to start only with the NCERT. Fine, and I've been asked various questions from various, you can say, students that what exactly is to be done to modern India. So I'm simply giving the idea. Now, this is the book of modern India, that is the NCERT Bipin Chandra. All right. So this book you have to study from modern India only. Fine, and this is how. No, the idea is Alok. This is 999 for the full course of PT test series. All right. So that is the program, fine. So that's why I told you it's very promotional fees. It's not actually a fees. It's only the, I would say, the cost that is involved there in typing, the cost that is involved in streamlining, all those things. That is actually the fee. So we are only promoting it. So we're not charging any, I would say, a proper fee for that. So that is the idea, in fact, fine. So similarly, you have to prepare modern India from this NCERT, and then finally you can also rely upon Bipin Chandra's The Struggle for India's Independence, the thicker one book. Fine. So, और चाहे स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम से भी आप रिवाइज कर सकते हैं. So as you wish, the way you want to prepare modern India. So this is how we are going to conduct the test of modern India also. Fine. Then the third test would be on geography. Fine. So geography test will be done on 13th of July, and the same would be discussed on 19th of July. So for geography, you guys have to study, of course, physical geography, and now this book is very important. This book is very important.
It is India's physical environment geography of class 11th. All right. So of course you guys have to go through this particular book and physical geography also of NCRT, and and then finally you guys have to go through this JC Leong book. So NCRT and JC Leong book would be required for all of you to prepare the geography. And as I told you also last time, that you have to go through the map. All right. So Atlas is another very important segment of your geography syllabus. So you should not miss about that. Last but not the least, I would also like to add on that if you have this book, now see India, People and Economy. Now this book is equally very important, class 12th NCRT book. All right. So at least I would say I will ask you to all to go through the unit one, unit two, and unit three. All right. So the three units are important in this book as well. So India, People, and Economy. So this is how geography has to be also prepared by all of you through the NCRT and adding GC Leong onto that. Right. तो ये ज्योग्राफी के लिए करना है जो कि आपका तीसरा टेस्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए डिस्कशन आपका शेड्यूल्ड है जो कि 19 जुलाई को डिस्कशन होगा लाइव, ठीक है, मतलब ऑनलाइन होगा आप सबके साथ। और फिर पांचवा टेस्ट जो है वो पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर पे है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हमेशा प्रॉब्लम करता है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। खासकर आर्ट एंड कल्चर स्कूल्स वगैरह में पढ़ाया जाता नहीं है वैसा, और क्वेश्चंस का जो नेचर है वो भी काफी अंदर से वो पूछते हैं। तो डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए फुल एक आर्ट एंड कल्चर पे ही टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ही बनेगा, ठीक है, जो मैं ही बनाऊंगा इनफैक्ट। और उसके लिए भी जैसे कि मैंने पिछली बार ही बताया था आप लोगों को कि आर्ट एंड कल्चर में व्हाट यू गाइस हैव टू डू, आपको करना क्या है, प्राइमरली यू गाइस हैव टू ओनली गो थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक, और दिस इज वन बुक दैट यू हैव टू गो थ्रू primarily and introduction to Indian art, that is class 11th NCERT। तो ये बुक पढ़नी है पहले पहले आर्ट एंड कल्चर पे, और उसके बाद डेफिनेटली आपको एंशिएंट और मेडिवल की, सी एंशिएंट की और मेडिवल की ये एनसीईआरटी पढ़नी है जो पुरानी वाली है, ठीक है। सो ये पुरानी वाली एंशिएंट मेडिवल की एनसीईआरटी भी पढ़नी है। इसमें से आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट निकालना है, कौन कौन से चैप्टर्स है मैं इसको अभी कुछ देर में अपलोड कर दूंगा कि इस बुक में कौन कौन चैप्टर जो है आर्ट एंड कल्चर के स्पेसिफिक आपको पढ़नी है, ठीक है। तो वो आप वहां से इसको कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डायमेंशन दैट इज आर्ट एंड कल्चर में ही देखिए, आर्ट एंड कल्चर में मतलब कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है इसको क्या करना है, ये एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो 3 बुक है ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की, इसमें मैं कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर पढ़ना भी है तो आप पढ़ेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 आप पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो आप पढ़ेंगे इसमें से कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको पहले बता देता हूँ। इस बुक में आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ही इसमें पढ़नी है आपको इस बुक से। ये आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम रेफरिंग दिस बुक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट 1, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में आप लोग इस सेगमेंट को इसको पढ़ना है, इस बुक को पढ़ना है, सिर्फ इस वाले बुक को पढ़ना है जो पार्ट 2 है, बाकी पार्ट 1 पार्ट 3 नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने जो मैंने आपको दिखाया जो आर एस शर्मा वाली बुक और सतीश चंद्रा वाली बुक जो है एनसीईआरटी का, अगर आपने वो पढ़ा है तो यू डोंट नीड, इनफैक्ट वही पढ़ना है, लेट मी टेल यू, पढ़ना वही है। इस थीम वाले बुक से आपको सिर्फ 2-3 चैप्टर्स आपको रेफर करना है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो सब चीज एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट एक्चुअली यू गाइस हैव टू डू इट, फाइन। So this is one thing that you are supposed to do as far as your history is concerned, ठीक है। उसमें भी आर्ट एंड कल्चर का जो टेस्ट होगा उसमें आपको क्वेश्चन जो है इन सारे एनसीईआरटी से प्राइमरली होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द वंडर दैट वाज इंडिया से भी कुछ कुछ होंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। क्वेश्चन जो है जो वहां से होगा वो ऑलमोस्ट इसमें भी दिया हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। जो नहीं होगा मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा डिस्कशन में भी, ठीक है।
So this is what you have to do. CCRT website, you can leave. You can leave. There's no need to actually, I would say, मूव हियर एंड देयर, क्योंकि होता क्या है ना, देखो इतना कुछ पढ़ने को है ना कि आप पढ़ते रह जाओगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो एक ना समझना होगा कि कहाँ अपने आप को बांधना है, कहाँ अपने आप को रोकना है। अगर आप नहीं बांध पाओगे, नहीं रोक पाओगे, तो क्या होगा कि यू विल एक्चुअली कीप 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 ट्राइंग टू स्विम इन द ओशन। ठीक है, तो स्विमिंग इन द ओशन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने के लिए तो कमी तो है ही नहीं। मेरे पास ही आर्ट एंड कल्चर के ऊपर कम से कम 8-10 किताबें हैं। तो सवाल ये नहीं है कि वो सब पढ़ना है, सवाल ये है कि मैं उतना पढ़ूं जिसको जिससे पढ़ने के बाद मेरे पास जो बेसिक सेंस है आर्ट एंड कल्चर का, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आर्ट एंड कल्चर का, वो उतना मैं कर पाऊं। ठीक है, जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पता हो उतना मुझे पता होना चाहिए। अब मैं आर्ट एंड कल्चर के एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि अब अजंता में कौन सा मटेरियल बनाया गया और एलोरा में कौन सा मटेरियल लगाया गया, ये तो कोई स्कल्पचरिस्ट जो होगा वही बताएगा आपको। देयर इज नो नीड टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर डिटेल। ठीक है, तो करना क्या है कि आप सिंपली फोकस करेंगे एनसीईआरटी पे। नितिन सिंघानिया भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, नितिन सिंघानिया भी बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए मैं इसलिए इन सारी बातों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई उन सारे एरियाज में जो एक व्यक्ति को आईएएस बनने से पहले पढ़ लेना चाहिए, उतना आप पढ़ ले, और पढ़े ही नहीं उतना आप याद कर लें। ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम उतना ही पढ़ें जितना हम इजिली ग्रास्प कर ले, और जितना हम इजिली उसको रिटेन कर पाए अपने इस एग्जाम को क्रैक करने के। अननेसेसरी पढ़ने के चक्कर में इतना ज्यादा अपने आप को न फैला लें कि उसको जब कॉन्सेंट्रेट करने का समय आए तो उसी में आप कॉलेप्स कर गए। ठीक है, तो शुड नॉट एक्चुअली go for let's say reading such kind of I would say the guidebooks। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है नितिन सिंघानिया को। बुक है आपके पास तो रखिए, अच्छी बात है। कि मेरा मानना है कि किसी बुक में आज तक ऐसी कोई बुक नहीं है जिससे आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो हर बुक में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ अच्छी बातें होती है। तो आपको करना क्या है कि उस बुक को रखना है, एंड व्हाट यू नीड टू डू दैट यू हैव टू रेफर दैट बुक a few chapters। Suppose I give you one example। Suppose UPSC had asked you something on folk dance। ठीक है, अब फोक डांस में उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया 2013 के प्रीलिम्स में, और आपको फोक डांस पे इन सारे एनसीईआरटी वगैरह में इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं दिया होगा या कहीं नहीं इनफैक्ट। तो आप नितिन सिंघानिया उठा के सिर्फ वो फोक डांस का चैप्टर पढ़ लेंगे, दैट्स इट। इसको कहते हैं रेफरेंस बुक। ठीक है, तो आप रेफरेंस बुक के रूप में उसको रखिए, नॉट एक्चुअली should not be made as a base book। तो बेस बुक बनाने की गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप उसमें ही गोता खाते रह जाएंगे, फिर निकल नहीं पाएंगे उससे बाहर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इट। फाइन, सो what you have to do that this is what I am going to ask you questions in art and culture primarily। so art and culture questions would be from ancient medieval only in fact। ठीक है, तो वहां से होगा थोड़ा कुछ मॉडर्न में भी, जहां जहां आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंस है वो भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पे बिलीव करना है, और जो मैंने आपको बताया आर्ट वाली बुक एनसीईआरटी की वो पढ़नी है। ठीक है, तो इतना काम करना है। ऑलराइट, so then moving to let's say the next dimension, that is environment and science and technology। so see next question, next paper would be on सॉरी उससे पहले इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी है, सो उसके बारे में तो बता दूं। सो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की मैं बात करूं, तो इन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में एज यू ऑल नो दैट यू हैव टू गो थ्रू वन बेसिक बुक। ठीक है, और बेसिक बुक का जब नाम आता है तो एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी भी है। ठीक है, गवर्नमेंट इन इंडिया जो है वो गवर्नेंस इन इंडिया वाली बुक भी है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक कोई अगर लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, क्योंकि सब वही पढ़ते हैं तो उतना पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत पढ़ने से क्या होगा कि आपको बेसिक सेंस आ जाएगा, जितने पॉलिटी के मेजर डायमेंशंस है वो सेंस आ जाएंगे, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेंस आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको वहां से कर लेना है काम। लेकिन उसके साथ साथ ये रखना जरूर है। ठीक है, ये बेयर एक्ट है पीएम बख्शी का। ठीक है, तो पीएम बख्शी का बेयर एक्ट लेटेस्ट जो भी है आप ले लेंगे। इसमें जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, चाहे सिटीजनशिप एक्ट में हो, चाहे आर्टिकल 370 का हो, वो सारा आपको इसमें दिया होगा लेटेस्ट वाले में।
तो उससे इसको आपको रेफर करना है, ताकि जो करंट में जो डायमेंशंस आए हैं, जो इश्यूज आए हैं, वो आपका क्लियर हो। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको ये करना है। दूसरा चीज, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए थोड़ा सा आपको यू नीड टू गो थ्रू ऑल्सो द आइडियाज ऑफ द मैगजीन्स ऑफ योजना। अगर योजना अगर है आपके पास, तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी के पास, आई मीन इफ एनी ऑफ यू is carrying yojana of last 1 year, ठीक है, you can send me only the content, the pages of the first page of every yojana, that is content of yojana. I'll give you the exact name of the articles that you have to go through, ठीक है. So only few of the, I would say, the articles of every yojana is important, but definitely yojana is important. You can understand the importance of yojana in the context of that I'm still carrying Yojana of 2011, which is on NGOs. All right, it is all because that in governance you have to study about NGOs. ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा मेरे पास information है. Similarly, human rights and social justice. All right, so these are the yojanas which I'm still carrying of 2011 2012. Why? Because already these yojanas are a good repository of I would say huge informations on the topics that is actually that are mentioned there in your syllabus. ठीक है, तो इसलिए इसको आपको करना है. फाइन. सो व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स सी, योजना यू हैव टू सपोर्ट विथ योर लक्ष्मीकांत एंड दिस बेयर एक्ट. ठीक है, ये बेयर एक्ट है पीएम बख्शी का. तो इसके साथ आपका पॉलिटी वाला जो सेक्शन है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन है, दैट विल बी थॉरली प्रिपेयर्ड. ठीक है, इतना आपको फिलहाल करना है अच्छे से. फाइन. Then coming to the next dimension, that is environment and science and technology. See, environment and science and technology is one thing. हाँ, मनोरमा ये बुक में दिया हुआ है. ठीक है, वो जो अमेंडमेंट्स है, लेकिन बेयर एक्ट में क्या होता है कि दे डिस्क्राइब इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द केसेस एंड द verdicts given by also Supreme Court. ठीक है, so Supreme Court verdicts are also mentioned there. So it will always help you in terms of understanding the amendments and their relevancy, specifically in the context of being asked as a question there in the examination. ठीक है, तो ये फायदा होगा अगर आप इसको ऐसे करेंगे तैयार तो. ठीक है, so that's what actually you can do it. Fine. So now this is what you are supposed to do as far as your I mean this aspect is concerned. Fine. Actually the uh, now let me get into the environment and science and technology. So they see the next test, that is sixth test, is going to be on environment. And okay, so Anand, if you have a complete yojana, then what you can do, you can simply send me the I would say picture of the first page of the contents. ठीक है, आप मुझे सिर्फ उसका पिक्चर लेके व्हाट्सएप पे, मेरे नंबर आपके पास होगा, आप मुझे वो भेज दीजिएगा. मैं एग्जैक्टली उसका लिस्ट बना के मैं अपलोड कर दूंगा, इसमें से कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं सभी को. ठीक है, तो सबके लिए फायदा हो जाएगा. जिनके पास योजना नहीं है वो भी उस योजना को लेके पढ़ लेंगे एक बार कम से कम. ठीक है, that's what you can do. Fine. Coming back to this issue, that is environment and science and tech. So science and tech and environment. I told you also last time that Manorama yearbook is very, very important for all of you. So you guys have to go through Manorama yearbook. I believe that many of you must have started going through Manorama yearbook. ठीक है, जो अभी नहीं पढ़ पाए हैं तो प्लीज उसको पढ़ लीजिए. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर prelims actually. ठीक है, so very few people know about it, and I'm damn sure that people who actually been in my contact, and if they have followed my advice, they would always be having advantage, especially in this year's prelims. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप कर लीजिए कि मनोरमा ये बुक लेके उसमें से साइंस एंड टेक और जो इन्वायरमेंट के सेगमेंट्स का जो चैप्टर्स है, जो जो पेजेस दिए हुए हैं, वो पढ़ लेना है. और मैंने पहले ही बता दिया है आपको, मेरे उस पर भी शायद पेज पे भी मैंने हाईलाइट करके दे दिया है कि मनोरमा ये बुक में कौन कौन से चैप्टर्स को, कौन कौन से पेजेस को पढ़ने हैं. ठीक है, तो शायद आपको अब ज़्यादा आसान हो गया हो. मनोरमा ये बुक इतना वॉल्यूमिनस बुक है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो तकरीबन कुल मिला के 200-250 पेजेस होंगे जो पढ़ना है शायद. ठीक है, तो एक बार आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा. ठीक है, so that's what actually is the Manorama book. Now coming back to this environment. Now see, environment is another very important issue. Why? Because I have seen papers of last 4-5 years, and in last 4-5 years papers have given me one idea, one clear-cut idea. In fact, I'll share with all of you
See, in environment, last I would say since 2013, in environment, UPSC has been asking questions almost on an average more than 13 to 14 questions. See, 14 was asked number of questions in 2013. In 2014, they asked you 20 questions for environment and ecology. In 15, 12 questions. In 16, 16 questions. In 17, 17 questions. In 18, 10 questions. And most importantly, in 2019, they had asked you 19 questions. So, can you understand the importance of this segment? That is environment and ecology. 19 questions can actually decide your fate, can decide your fate of being selected or not being selected in prelims. Okay, so 19 questions matter a lot. And I would say that if you, I mean, calculate the total weightage of the questions of even last year, the number of questions were highest from Indian economy and followed by environment and ecology. So if someone is good in economy and environment, I mean, he or she will be able to correct almost more than 35 questions very easily because 20 questions were asked from economy part. So economy and environment, if these two areas, if you really work hard means if you really work genuinely, in fact, if you work genuinely, you have gone through the basic material thoroughly, then I don't find any reason that you're not going to be selected in this year's prelims. ठीक है, तो इतना आपको करना है. So खैर, Acha, AK has asked a question that on which page, sir, you have told this lecture chapter. I have already uploaded it on my, I think, Facebook page. All right. So there is a Facebook page of mine that is Amit Sinha IS Academy. On that, I have already uploaded the Manorama yearbook chapters and exact pages over there. ठीक है, मैंने उसको मार्क करके डाला हुआ है. ठीक है, एक बार आप देखिएगा, नहीं मिलेगा आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, देन आई विल अगेन सेंड इट टू यू. ठीक है, तो खैर, so I was talking to all of you the relevance of environment and ecology. Okay. Now see, environment and ecology. Now I told you last time also that environment and ecology I mean, it needs to be done through from I mean, in fact from the basic textbook. Now Iraq Barucha, I told you last time also that Iraq Barucha is one thing that you guys have to go through. ठीक है, it's a very basic textbook. लेकिन मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ जो पहले भी बहुत 2 बार मैंने शायद बताया था. फिर उसको चूंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में डील नहीं करता हूँ, सो आई एक्चुअली हार्डली आई मीन डिस्कस दोज एरियाज. So, but I can tell you exactly the sources from where the questions actually have been asked. Okay. Now see, I can give you the exact source. Now see, I don't know how many of you have seen this particular book. This is a book on environmental education that is very popular among the schools. All right, environment education book of S. Chance, very popular in the schools, and these books are really great repository of I mean informations. Great repository. I mean, I would say, I mean, very few people know about it. I mean, definitely, even I know even the teachers who teach environment ecology have no idea about it. But I can tell you, it is all because of my inquisitiveness to actually search and know about the sources which UPSC members also keep referring in terms of setting questions for all of you. And this is something which I learned right from my days. So, I mean, even during my days, I was very keen to know about that what all sources they refer. They refer for environment, and they refer, in fact, also for other areas. In fact, all right. So, there only I found this particular source very relevant. All right. So, but I'm disclosing it for the first time, in fact, in front of all of you, especially to the students who actually have been very close to me. They must get some benefit if they are listening me so patiently for last so many, I would say, days during this period of lockdown. So idea is, both are class, in fact, 12th. Yeah, both are, no, one is 11th and 12th. In fact, one is of class 11th and another one is of class 12th. So now these books are very, very important. Similarly, a book is equally very important. That is a book on ecology and sustainable development. So you don't need to buy it. I mean, let me tell you, don't need to buy it. I'll set the questions definitely from these books. So this is of NPT book, very, very relevant
as far as sustainable development ecology is concerned. Fine. So, of course, these books will be referred in terms of setting good questions for all of you. And I am assuring you that some of the questions from the areas would definitely match also there in the examination. Fine. So, this is the benefit of actually getting into this particular test papers over here. So, that's what actually I'll keep doing this exercise. So, environment and ecology and science and technology has to, they have to be done through this particular means. Fine. It's from science for science and technology. Of course, India Yearbook has to be also referred. Fine. I told you also last time. Then, for science and technology, the current affairs of last 2 years are very, very important. So, Vikramjit Singh has asked me a question: 2 year current affairs is must. Yes, it is must. Yes, it is must, because you can't take chance. You can't take chance, especially in the areas like environment and science and technology, which actually act at times a deciding factor in your success and your failure. So you can't actually take a chance this year. You have enough time to actually prepare it. You can easily prepare it, especially for these areas. I told you also last time that current affairs is very, very important. And at the outset, only today in today's session, I mentioned it that you guys have to prepare last 1 year current affair, which is going to be asked to you uh, as the very first test that will be conducted over here on our platform. Fine. So definitely you have to prepare that current affairs area, and there I just discussed with all of you. The syllabus of that would be the current affairs of May 2018 to June 2019. So since May 2018 to June 2019, you have to also prepare these issues. All right. And of course, as AK has rightly pointed out, that CAS 19 was in news in 2018 and asked in 2019. Of course, you're right. You're right. I mean, this Casper और कैस नाइन जो भी आप कहेंगे, ये पहले भी न्यूज में था, और मुझे मेरे पास अभी भी टेस्ट पेपर बना हुआ है। जब मैं AA नाम का कोचिंग होता था हमारा, तो उसमें मैंने क्वेश्चन सेट किया था, और वो कैस्पर 9 वहाँ पे मैंने उसको पूछा था। ठीक है, तो मुझे याद है, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम मैं ही सेट करता था, और आज से नहीं, वो सिनर्जी के ज़माने से, जब से हम सिनर्जी में थे तब से। ठीक है, तो इशू ये है कि आई हैव अ फेयर आइडिया अबाउट कि कहाँ से क्वेश्चंस आता है और कहाँ से वो पूछते हैं इनफैक्ट। इसलिए मैंने साफ साफ कहा कि करंट अफेयर्स के मामले में थोड़ा सा आपको अपने आप को उदार बनाना है, लिबरल बनाना है, कि लास्ट 1 ईयर ही नहीं, लास्ट 2 ईयर्स को थोड़ा रेफर कर लेंगे। हालांकि लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, हालांकि आइडिया इज दैट करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया है। इफ यू सी द पेपर इन फैक्ट ऑफ लास्ट 2 years or 3 years, in fact, last 3 years paper, if I have to tell you, they have been asking you questions in 2017, only 8 questions of current affairs. Similarly, 18 10 questions and 19 7 questions. तो 8 10 7 ये क्वेश्चंस का एवरेज है लास्ट 3 साल का करंट अफेयर्स में। अब सवाल यहाँ ये है कि करंट अफेयर्स किसको कहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स साइंस टेक में भी होगा, करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट में भी होगा, करंट अफेयर्स पॉलिटी में भी होगा, करंट अफेयर्स इकोनॉमी में भी होगा। तो कहने का ये है कि ये जो करंट अफेयर 7 8 9 जो मैंने आपको फिगर बताया, 7 इनफैक्ट 10 और 8, ये फिगर वो है जिसको हम करंट अफेयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेट्स से द इंटरनेशनल इश्यूज के रूप में मानते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल आईआर के कॉन्टेक्स्ट में हम करंट अफेयर्स को काउंट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा तैयार रहना है कि उस सेगमेंट से भी आपको 7 8 क्वेश्चंस आते हैं। तो आईआर वाला सेगमेंट जो है वो कुछ मिसलेनियस है, जिसको हम करंट अफेयर्स मानते हैं। वो सारे क्वेश्चंस को ना हम पॉलिटी में डाल पाते हैं, ना इकोनॉमी में डाल पाते हैं, ना साइंस टेक में डाल पाते हैं। तो कुछ मिसलेनियस है जो जीके टाइप का क्वेश्चंस होता है, वो भी कभी कभी आता है। ठीक है, तो उसको भी हम करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही मान लेते हैं। तो खैर, कहने का मतलब है कि करंट अफेयर्स एज सच जो हम इम्पोर्टेंस देते थे, उसका इम्पोर्टेंस पिछले 3 साल में घट गया है, कम हो गया है। तो थोड़ा सा हमें ये समझना है कि घट गया है तो क्या हम उसको कम पढ़े। तो मेरा मानना है कि नहीं, आप उसको घट गया तो कम ना पढ़े, आप उसको ज्यादा उसका जो दायरा है बढ़ा दीजिए। और मैंने जैसे जैसे अभी समझाया आपको कि करंट अफेयर्स अगर 2 साल का पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं होता है। उस करंट अफेयर्स में आप पॉलिटी भी पढ़ते हैं, उस करंट अफेयर्स में आप इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, उस करंट अफेयर्स में आप साइंस टेक भी देखते हैं, इन्वायरमेंट भी देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप बेसिक सब्जेक्ट्स को ही रिवाइज कर रहे हैं। कहने को वो करंट अफेयर्स है, लेकिन है रिवीजन आपको बेसिक सब्जेक्ट का है। ठीक है, सो ये करना है। ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चंस आता है, डेफिनेटली आता है। ठीक है, तो देयर आर 2 ways टू डू इट, डील इट। देखिए, एक है कि मेरी बुक में भी जो मैंने बुक लिखी है आईआर की, उसमें भी एक चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर।
ठीक है, उसमें यूएन वगैरह, यूएन की जितनी बॉडीज है सब डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, एक वो है। दूसरा तरीका है कि मनोरमा ईयर बुक में भी ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे एक चैप्टर है मनोरमा ईयर बुक में, ठीक है। तो दूसरा सोर्स हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तीसरा सोर्स है करंट अफेयर्स, ठीक है, जैसे कि उन्होंने पूछ दिया, मान लीजिए कि AIIB, ठीक है, तो एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, है ना, तो अब AIIB पूछ दिया तो वो मेरे बुक में भी है, वो आपको करंट अफेयर्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो AIIB आप वहां से पढ़ लिए, बुक से भी पढ़ लिए और करंट अफेयर से भी पढ़ लिए, तो आपका पूरा वो कवर हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी आप एक सोर्स, चाहे वो मेरे बुक हो, उसको देख लीजिए और साथ साथ करंट अफेयर्स जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ देंगे तो आपको कुछ नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर से, ठीक है। मान लीजिए अभी आजकल FATF चल रहा है न्यूज में, आज की भी अखबार में पढ़ेंगे तो आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रेफरेंस आ जाएगा कि इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ठीक है। तो FATF इंपॉर्टेंट है, वो मेरे बुक में भी थोड़ा दिया हुआ है और करंट अफेयर्स में भी दिया हुआ है, तो जो करंट अफेयर्स में दिया वो जोड़ लीजिए, जो मेरे बुक में दिया वो जोड़ लीजिए, FATF पूरा तैयार हो जाएगा। तो FATF पे कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली हैंडल इट, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल दी सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल सेगमेंट को भी आपको ऐसे ही टैकल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का टेस्ट, जो कि 10th ऑफ अगस्त को होना है, ठीक है। तो 10th ऑफ अगस्त को जो होगा वो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का टेस्ट होगा। तो उसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 बुक आती है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की बुक आती है, मैंने पहले ही बताया था, और इसमें आपको अभी जो लेटेस्ट बुक है वो भी आप ले सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ लास्ट के 3 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर बता देता हूँ 3, चैप्टर नंबर इनफैक्ट चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। इसमें 4 है जो मनी एंड बैंकिंग पे है, 5 जो है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी पे है, और 6 है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। तो ये 3 चैप्टर्स आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास 12 की एनसीईआरटी से पढ़नी है, ये जरूरी है, ये आप भूलिएगा मत, ठीक है। उसके बाद जो मेरी बुक है ओपनिंग पब्लिकेशन वाली, वो आप एक बार पूरा पढ़ जाइए, तो आपको पूरा मेंस का सिलेबस आपके रीच में होगा, ठीक है। तो यू विल बी हैविंग अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ मेंस। और इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स पूछे जाते हैं, मेंस के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आप प्रीलिम्स में मिस्टेक करके आएंगे, क्योंकि इकोनॉमी एकमात्र ऐसा एक एरिया है जो कि पूरा फैक्चुअल नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल है। तो फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, फिगर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यू हैव टू गो थ्रू this NCERT and my book. I think that is more than sufficient, and most importantly of last 1 year current affairs is there sufficient. So economy के लिए आप last 1 year के current affairs को ही देख लेंगे तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि this is how you have to deal with economy and social issues वाला सेगमेंट के साथ, ठीक है। इसमें एक सेगमेंट आता है सोशल इश्यूज और गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए क्या करना है आपको कि आपको सिंपल उठाना है इंडिया ईयर बुक के 3-4 चैप्टर्स। एक उसका रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर है, वो उठाना है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 2 चैप्टर तो हो गया। तीसरा हो गया वेलफेयर चैप्टर, हेल्थ एंड फैमिली अलग है, वेलफेयर अलग है। तो रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वेलफेयर चैप्टर, ये 3 चैप्टर हो गया। और एक प्लानिंग का चैप्टर है इंडिया ईयर बुक में। ये 4 चैप्टर आप पढ़ लीजिए तो गवर्नमेंट स्कीम्स मेनली जो है वो इससे आपका तैयार हो जाएगा, जो बेसिक है। उसके बाद करंट अफेयर्स आपको अपडेट करना है। अगर कोई पीआईबी का मैगजीन भी आता है मार्केट में आज, तो या पीआईबी कोई फॉलो कर रहा है, तो पीआईबी को जब आप फॉलो करते हैं या मैगजीन लेते हैं तो पीआईबी के में जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं सिर्फ उतना आपको कवर कर लेना है, ठीक है। या थैंक यू, हाँ सही सही बोल रहे हैं। AK, यस, लास्ट ईयर this keynotes question was asked directly in 2019. I taught it in the class, I remember that, yeah. So thank you for acknowledging it. Very few people are there in this world who acknowledge the work of good teachers, so thank you for that. So idea is that definitely, I mean, this is what you have to do as far as government schemes are concerned. अपना क्या है कि इंडिया ईयर बुक से बेसिक निकाल लेना है इंफॉर्मेशन, फाइन, और करंट अफेयर्स पीआईबी से जोड़ देना है,
ठीक है। तो ये दोनों आप जोड़ देंगे तो गवर्नमेंट स्कीम आपका तैयार हो जाएगा, शानदार। ठीक, इतना आपको करना है, आपको इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज वाले सेगमेंट को तैयार करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आप बोलते हैं लोग करने को, बजट एंड सर्वे में करना क्या है कि कोई भी आप जहां भी जिसका जिस्ट अवेलेबल है, जैसे बहुत सारे कोचिंग है, जैसे जीएस स्कोर है, तो उसका भी जिस्ट अवेलेबल है, मैंने देखा है, ठीक है। और इसका विजन का गलत है इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ा सा विजन में स्केप्टिकल होना है, कुछ भी आप पढ़ेंगे विजन का तो, ठीक है ना। विजन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, करंट अफेयर्स में इन्फॉर्मेशन गलत है, तो विजन में थोड़ा सा स्केप्टिकल होना है पढ़ने के समय। जीएस स्कोर का पढ़ सकते हैं, बजट सर्वे वाला जो उसका आया हुआ है, ठीक है, वो ठीक है, जिस सिंह है वो आप पढ़ जाइए एक बार, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू हैंडल दिस बजट सर्वे। हाउएवर क्वेश्चंस वुड नॉट बी आस्क्ड, ठीक, क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इस साल हो सकता है पूछ दे, क्योंकि बजट सर्वे पहले आ गया है और पेपर बनना है काफी बाद में, तो इस साल हो सकता है एक दो क्वेश्चन आ जाए बजट सर्वे से, तो आप सिर्फ उस जिस्ट को पढ़ के जाएंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बाकी जो सेगमेंट बचेगा, जो जिस्ट में नहीं होगा, जो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया हुआ है अपने डेस्कटॉप पे, मैं उन सारे पेजेस को आपको या तो अपने उस पे इकोनॉमी वाले पेज पे डाल दूंगा, ताकि वो पेजेस जो विजन ने छोड़ दिया है, जीएस स्कोर ने छोड़ दिया है, खासकर जीएस स्कोर ने छोड़ दिया है, वो वाला पेज मैं आपको हाईलाइट करके डाल दूंगा कि इस पेज में इंफॉर्मेशन है जिससे पीटीए क्वेश्चंस बन सकते हैं और आ सकते हैं। तो आप सिर्फ उन पेजेस को देख लीजिएगा सर्वे के लिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, इतना ही काम करना है, राइट। तो ये करना है इकोनॉमिक के लिए। फिर उसके बाद दैट्स इट इनफैक्ट। उसके बाद फिर जो आपका 8वां टेस्ट है वो करंट अफेयर्स पे है, 9वां टेस्ट जो है वो जीएस पेपर कंप्लीट है इनफैक्ट, ठीक है, वो पूरा मॉक टेस्ट है। फिर 10वां टेस्ट जो है वो सीसेट पे है, ठीक है, तो एक पेपर सीसेट का भी आपका होगा, ठीक है। और जो लास्ट टेस्ट है वो है स्पेशल करंट अफेयर्स टेस्ट, जो कि सिर्फ 2019 और 20 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये करना है आपको मतलब करंट अफेयर्स के संदर्भ में, ठीक है। Latest economic package, that's not important, leave that, because that is basically a temporary measure, that's not going to be a permanent measure in fact। So latest economic package जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मैं उसके लिए एक सेशन ले लूंगा, ठीक है, ऑनलाइन एक क्लास ले लूंगा लेटेस्ट इकोनॉमिक पैकेज के लिए, उसको अटेंड कर लीजिएगा, उसको सुन लीजिएगा, उसको सुन के आप जो नोट डाउन कर सकते हैं, जो नोट करवाने वाली बात होगी मैं वो करवा दूंगा। मान लीजिए एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज हुआ है, तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन होंगे जो फैक्चुअल भी है और इम्पोर्टेंट भी है लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस के संदर्भ में, वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता भी दूंगा उस पैकेज के संदर्भ में, उतना आप देख लेंगे, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। अपने से उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, टाइम लगाना है इस एनसीईआरटी और बाकी जो बुक्स मैंने आपको बताया ना उस पर ज्यादा टाइम लगाना है, कि वो आपको रिजल्ट देगा। बाकी ये सब काम जो है ना रिजल्ट नहीं देता, ये आपका टाइम से कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, बस इतना ही करना है कि आपको जो जो बताया अभी वो काम करना है, ठीक है। तो लास्ट जो टेस्ट है वो भी करंट अफेयर्स पे है, उसमें सिर्फ 19-20 का करंट अफेयर्स का पेपर ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये 11 टेस्ट है, जिसके साथ मतलब टेस्ट के साथ हम लोग लाइव आपका इंटरेक्शन भी होगा, ठीक है। सारे टीचर्स जितने टीचर जो भी इन्वॉल्व होंगे पेपर में, आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये पेपर या ये क्वेश्चन इन सर ने दिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपसे वार्तालाप होगी उनकी, और वो भी बताएंगे आप के क्वेश्चंस के नेचर्स और फैक्ट क्यों पूछा गया, ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशंस क्या होंगे, क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपका थोड़ा सा मोटिवेशन भी बना रहेगा पढ़ने का, और साथ साथ आप जुड़े रहेंगे एक सही रिदम में, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आपको कोई नया ना गाइड करे या आपसे कोई ना बात करे, so what generally happens that you read something, you study something, and you forget it also, sir, very soon, and you don't actually realize that why and what is the importance of that, and at times what happens, you also feel low कि भाई 3 दिन से बहुत पढ़ लिया, आज चौथा पांचवा दिन आराम करूंगा, या पढ़ रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसको कितना पढ़ूं। तो उससे क्या होता है ना कि यू डोंट फील हाईली मोटिवेटेड। सो इंटरेक्टिंग विथ योर टीचर्स, विथ योर मेंटर्स, विथ योर गाइड, it always boosts your morale. It always boosts your morale. It always keep you unvitiated. All right. So it always keep you high on your spirit. So that is always good for every and any candidate who is serious to crack this examination. So yeah, thank you, Rohan. Thank you, Ajab. Thank you so much.
So idea is this normally happens, and when I was also preparing, no, this exactly used to happen with me. So since I was surrounded with good I would say candidates. One of them was my elder brother only, who is now an IITS officer. So we used to talk and we used to interact with each other, and through that only we used to keep motivating each other. All right, when we used to feel low, we used to ask a question to each other, and then we used to ask each other to write some answers also on that. So क्या होता था, इससे हम motivate होते रहते थे धीरे धीरे. So exactly, I can feel about all of you as well, that if you're not studying in a group, or rather you don't have a group to interact with them regularly, I don't find any reason that why will you not feel low in this particular period of your preparation. Low feel आप करोगे ही करोगे. That's very obvious. I can empathize with all of you. ठीक है. So समझना यहाँ ये है, what you have to do, you have to keep yourself motivated always, and to keep yourself motivated always, you need to have someone who can guide you, who can command over you in terms of giving you the task, the short-term task, and seeking your feedback on that, testing you on those particular tasks, whether you have been able to complete it, you have been able to do it or not. So therefore, there is a need of a good mentor, a good guide, or a good teacher in your life. ठीक है, तो वही बात है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य नहीं मिलता तो नौ चंद्रगुप्त मौर्य बन पाता. तो एग्जैक्टली आपको समझना है कि आपको भी एक चाणक्य की जरूरत है, आपको भी एक मेंटर की जरूरत है. एंड आई फील दैट आई कैन बी अ गुड मेंटर. ठीक, आई कैन बी अ गुड गाइड फॉर ऑल ऑफ यू. सो यू जस्ट कीप प्रिपेयरिंग ऑन दीज लाइन्स. ठीक है, तो इस पे आपको थोड़ा काम करते रहना है, और जहां जहां आपको लगे कि यू एक्चुअली नीड some more assistance, you need some more feedback, you need some more ideas about it, you all are free to always, let's say, contact with me. Either give me a call directly or maybe messaging to me directly. Fine, because my online classes have also started at different platforms. So that is another issue where I keep engaged. So this is how we can actually keep interacting with all of you. So I believe that most of your questions I have addressed in this preview to the PT test series uh, of today's discussion. And I believe that I mean, definitely, I don't know how many of you, but certainly some of you would definitely be interested in joining the test series. All right. So what you can do that you can only I'll share with all of you the link or the form. In fact, you can fill up the form, you can send it back to us. All right, and through that only we'll give you the further you can directions how to join the test series. ठीक है, टेस्ट सीरीज आप पक्का ज्वाइन कीजिए. इससे आपका क्या होगा, प्रिपरेशन आपका मोटिवेटेड रहेगा, और हर 10-15 दिन पे एक नया टास्क रहेगा, तो उससे हमें भी मालूम पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं, और इनफैक्ट आपको मालूम पड़ेगा कि करना क्या चाहिए. ठीक है. So Rohan has asked me a question. So what about answer writing at this time, especially for essay and ethics? Rohan, I'll suggest you don't go for writing answers this time, especially for essay and ethics. See, I I mean, the last session also, that ethics and world history, you guys can prepare at this moment. In fact, this was the month. This month, you can also work for your ethics and world history segment. And if you have not done it in the past, then, and if you have done it, then it's all right. Then you can move to any other areas. But if you've never done it, then this is the only time where you can actually work upon your ethics and world history. So I told you last time also, this is the book which I keep telling to all of you to read in the world history. This is contemporary world history book of class 12th. Fine. Now this book is not published now. This book is not published now. It the last time I think it got published was in 2004. Fine. So this is a book written by three authors: Huck, Huck, Mandal, and Patnaik. So Huck, Patnaik, and Mandal. There are three authors of this book. So this book is good one in terms of covering your syllabus. ठीक है, अगर कोई एक बुक जिसमें जो सिलेबस आपका लिखा हुआ है यूपीएससी के द्वारा जो कवर करता है, तो ये यही बुक है. ठीक है, इसमें अमेरिकन रिवोल्यूशन से लेके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेके वो पूरा कोल्ड वॉर तक पूरा कवर किया हुआ है. सो दिस बुक यू कैन रेफर एज फार वर्ल्ड हिस्ट्री इज कंसर्न. दैट्स वन थिंग. आई टोल्ड यू आल्सो लास्ट टाइम एथिक्स के लिए करना क्या है. ठीक है, एथिक्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप अगर आपने क्लास किया हुआ है कहीं तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो किसी भी कोचिंग का क्लास नोट्स उठा लीजिए, उसको पूरा पढ़ जाइए,
पढ़ने के बाद उस क्लास नोट्स और सिलेबस और क्वेश्चन बैंक में मैच करवा लीजिए कि सिलेबस में जो दिया हुआ है वो पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया गया है उससे क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पिछले लास्ट 6-7 ईयर्स के पेपर को उठा के देख लीजिए। अगर हो पा रहा है तो वो मटेरियल ठीक है, नहीं हो पा रहा है जहां जहां गैप्स है सिर्फ उन गैप्स के लिए आपको इंटरनेट से सर्च करके वो मटेरियल निकाल लेना है। ठीक है, कुछ वीडियोस भी हैं एथिक्स पे मेरे जो मैंने डाले हुए हैं कुछ कुछ सेगमेंट्स के ऊपर, खासकर जो साइकोलॉजी वाला सेगमेंट था, क्योंकि साइकोलॉजी वाज वन ऑफ माय ऑप्शनल्स आल्सो, तो वो सेगमेंट का मैंने वीडियो डाला हुआ, वो आप वहां से उसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू फॉर एथिक्स। राइटिंग आंसर्स राइट नाउ आई वुड से अवॉइड इट, रादर व्हाट यू डू, मेक सिनॉप्सिस, मेक सिनॉप्सिस ऑफ व्हाटएवर यू आर रीडिंग दिस डेज। ठीक है ना, क्योंकि वही फाइनली रह जाएगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं इतना कुछ पढ़ना है कि वो ओवरलैप होते होते धीरे धीरे वो ओवरशैडो हो जाता है। तो आपको करना क्या है, पढ़ें और आपने सिनॉप्सिस बना लिए। सिनॉप्सिस मतलब पॉइंट्स, कि इन पूरे सेगमेंट्स में, ये पूरे चैप्टर्स में मुझे ये 10 पॉइंट्स याद रखने, या 10 पॉइंट्स ही मैंने निकाले हैं, वही फाइनल रह जाएगा आपके साथ। वही फाइनली आपको फाइनल डे के दिन भी, जिसको डी डे कहते हैं, उस डी डे में भी आपके साथ वो रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तैयार करना है कि पढ़ें और पढ़ने के बाद सिनॉप्सिस बना लिए, बना के उसको रख दिए या वहीं पे उसको अटैच कर दिए और चिपका दिए उसको, कि भाई जब भी रिवाइज करना हो तो ये निकाल के पेज रिवाइज कर लूंगा अच्छे से। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज फार एज एथिक्स एंड एसेज का। इससे तो भी छोड़ सकते हैं, इससे के लिए कोई अभी स्पेशल प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रिपेयर करने की जरूरत है ये बेसिक एरियाज, क्योंकि बेसिक एरियाज में ही अभी प्रॉब्लम है, तभी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये हो जाता तो बेसिक तो प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो अभी बेसिक्स पे ज्यादा काम करना है। इससे वैसे तो देखो, मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक इससे में कहीं प्रिपेयर नहीं किया, बट आई वाज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स इन एसे। ठीक है, 139 स्कोर आई हैव डन इन एसे। ठीक है, इन 2000 आई थिंक 9 मिनट्स। ठीक है, तो वो उस समय वन ऑफ द हाईएस्ट था। तो आइडिया ये है कि एसे के लिए करना क्या है, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट इट, फेयर आइडिया इन टर्म्स ऑफ द टॉपिक्स दैट यू आर चूजिंग। ठीक है, और एसे के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि व्हाटएवर यू हैव गेन द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन from current affairs, from Hindu newspaper, from magazines, from your books, NCERT, etc., etc. You have to use all those informations while narrating, while writing a good essay. ठीक है, and essay has to be such कि उसको पढ़ने में किसी को भी इंटरेस्ट रहे। ऐसा ना लगे कि भाई इतना ज्यादा ये फ्लॉरी लैंग्वेज लिख दिया है, इतना ज्यादा टफ लैंग्वेज लिख दिया है, इतना ज्यादा फिलोसफिकल हो गया है कि पढ़ के समझने में ही मुझे लग रहा है अच्छा खासा टाइम। ऐसा नहीं, ऐसे ऐसा होना चाहिए कि आपका जो भाई क्लास 10th में अभी है या बहन अभी क्लास 9th में है, कि अगर आपने उसको दे दिया वो ऐसे पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ के समझ जाए और समझ के आपको अप्रिशिएट कर दे कि वाह भैया क्या लिखा आपने, वो होता है इससे। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू कीप योर राइटिंग्स सिंपल येट वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। ठीक है, तो ये तभी आप डेवलप कर पाएंगे when you have a fair idea about the subject and syllabus, and you have an idea of how to orient your ideas on the paper. ठीक है, तो essay is all about creative writing. ठीक है, creative writing करना है, तो creative writing क्या होता है कि when you start diverging the thinkings, and finally once you diverge your thinking, and then once you start converging your thinking on the paper, that becomes essay. ठीक है, तो मैं अगर आपको बोलूं कि इस ग्लास पे ऐसे लिखना है, तो इस ग्लास के ऊपर कितने आइडियाज आप डाइवर्ज कर सकते हैं, ठीक, कितने आइडियाज निकाल सकते हैं इस ग्लास से, ये होगा पहला काम ऐसे का। अब उस आइडियाज को कैसे उस टॉपिक पे, ग्लास पे ऐसे लिखा है तो आइडिया को कैसे उस टॉपिक पे कन्वर्ज कर सकते हैं, मतलब आपके आइडियाज को फिर कॉन्सोलिडेट करके उसको लिख सकते हैं, दैट इज बेसिकली एसे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। ठीक है, सो ये आपको करना है, फाइन। देन इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैंने बताया था जस्ट, इकोनॉमिक सर्वे के लिए कुछ जिस्ट पढ़ लेना है। सो क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय AK, so how to deal with that? So I would say that you should not deal economic survey directly, better you read only the gist of economic survey. ठीक है, and the economic survey, and most importantly your this the economic package. Now definitely I will take some lecture on these two areas for sure. ठीक है, तो वो लेक्चर सुन लेना है। ठीक है, और मैंने सब जस्ट बताया
कि इकोनॉमिक सर्वे के जो कुछ इम्पोर्टेंट पेजेस हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताता हूँ एक बात, मेरे कुछ वीडियोस होंगे अमित सिन्हा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उस वीडियो पे मैंने कुछ इनिशियल क्लासेस दिए थे, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इकोनॉमी क्लासेस। उसमें देखिएगा मैंने कुछ सेगमेंट्स डिस्कस किए हुए हैं, कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं। उसमें से एक टॉपिक है शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग, वो शैडो बैंकिंग वो पूछा जाएगा इस बार के प्रीलिम्स में, क्योंकि शैडो बैंकिंग वो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक सर्वे में इलाबरेटली डिस्कस किया हुआ है। इसलिए मैंने शैडो बैंकिंग उस वीडियो में भी बताया है पूरे अच्छे से, ठीक है। जब मैंने बताया तो बहुत सारे और लोगों ने जो मुझे फॉलो करते हैं वो बताना शुरू कर दिए हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो कहना मतलब ये है कि शैडो बैंकिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो वहां दिया हुआ है, वो आ सकता है, ठीक है। खासकर आईएलएफएस और बाकी सारे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के फ्लॉप होने के बाद, ठीक है। तो वहां पे ये सारे कॉन्सेप्ट जो दिए हुए हैं सर्वे में, वो मैं वैसे भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ कुछ जो बचे हुए हैं एक और दो वीडियो बना के वो सब डिस्कस करके आपको दे दूंगा। तो आपको करना क्या है, आप जिस्ट पढ़ लीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए, जो पेजेस में आपको हाईलाइट करके दूंगा कि भाई ये सारे पेजेस पढ़ लेना अच्छे से खुद से भी एक बार। वो आप ऑनलाइन या सॉफ्ट कॉपी आपके पास नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास है सॉफ्ट कॉपी। तो उस सॉफ्ट कॉपी से वो सारे पेजेस को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के उसको पढ़ जाइए। इतना ही करना है इकोनॉमिक सर्वे में, नथिंग मोर देन दैट। उसके ज्यादा कुछ भी करना है टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ होगा नहीं उससे ज्यादा, ठीक है। हाँ अभिनव, सो जो लोग को हाई कर दे वो अमित सर। हाँ, थैंक यू फॉर such kind of motivational words for me. So even I need motivation from all of you. Yeah, I'm also a human being. So this is what you have to you guys have to do in fact. Okay, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करनी है टेस्ट पेपर की, ठीक है। And I believe that I have been able to clear many of your doubts, and I've been also able to give you the message about the preview of the test series that we are going to launch from 30th of June, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ट के बाद नेक्स्ट वीक शायद इनफैक्ट डिस्कशन भी होगा, तो उसमें भी हमारा और आपका इंटरेक्शन बना रहेगा वीकली बेसिस इनफैक्ट। तो संडे संडे हम डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो इसी बहाने आप भी इंटरेक्ट करते रहेंगे मुझसे और मैं भी आपको समझता रहूंगा कि सही में आपकी तैयारी चल रही है ठीक से या नहीं चल रही है, ठीक है। तो इसके अलावा आई थिंक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड टुडेज सेशन, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन यू कैन अगेन आस्क मी, और उसके बाद हम लोग फिर टेस्ट पेपर मैं बनाया हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन बना चुका हूँ, तो वो बना रहा हूँ, रास्ते में बीच में ही। तो टेस्ट पेपर बनाना है तो वो इंक्लूडेड है। तो मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट पेपर्स वुड बी मेड बाय मी, निखिल सर एंड कनिष्क सर, ठीक है। तो इस ऐसे पेपर हम लोग बना रहे हैं कि वो रेलेवेंट लगे और क्वेश्चन डायरेक्टली आए ना आए उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो सेगमेंट्स हम ऑप्ट करें, जो चैप्टर्स हम ऑप्ट करें या जो एरियाज हम पॉकेट्स जो ऑप्ट करें, वो पॉकेट्स वहाँ मैच करेंगे। दैट्स व्हाट आई वी कैन एश्योर यू, ठीक है। ठीक है, so let us then conclude today's session, ठीक है। So now I am signing off and wish you all the best and keep preparing. And if you have any particular question, then you must be having my phone number. So just message me, WhatsApp me on my number, then I'll respond according to my available time, ठीक है। और उसके थ्रू हम लोग फिर इंटरेक्शन करते रहेंगे, ठीक है। So see you, take care, bye bye, all right, all the best. Yeah, bye. Bye. Thank you, all of you. Thank you, all of you, to listen to me so patiently for last almost an hour. Okay. So now I'm closing it down, signing it off. Wish you all the best. Yeah. Thank you, AK. Thank you, Anand. Thank you, Exclada. So I'm happy to see all of you, especially Exclada. She is only in class 12th, and many of you must not be knowing. She is a girl who is in class 12th but preparing for IAS right from class 12th, and see her motivation and her determination to crack this examination. All right, and she wants to become the next Kiran Bedi. So I wish her good luck. She definitely would be the next Kiran Bedi of India. All right. So now I'm signing it off. All the best.
to all of you, to all of my dear and dear students. Fine. See you. Take care. Bye bye.